Hello student, I am Dr. S. Kandhare. The title of our presentation is Photoperiodism Part 3 Phytochrome. Let us see the contents. So in this presentation we shall learn what is phytochrome, nature of phytochrome, functions of phytochrome. So this is the content of our presentation. So first of all we shall see what is phytochrome. Phytochrome is blue-green chromoprotein pigment. It is photosensitive and it is specially sensitive to red and far red light wavelengths, which triggers some physiological responses in plants, fungi and bacteria. Okay. So you can see that this is a complex kind of biomolecule showing blue-green coloration. Okay, it is actually pigment and it is photosensitive, and it is photosensitive especially to the red and far red light wavelengths. When this phytochrome absorbs these special red and far red light wavelengths, it triggers some physiological responses, and these physiological responses are very important in plants. So let us see what are these physiological responses and how this phytochrome show its change when it absorbs certain wavelengths, that is red and far red. So here you can see the nature of phytochrome. Phytochrome is a complex biomolecule consisting of protein, dimer and covalently bonded phytopigment called bylene chromophore. So you can see here this is the important name, that is bylene chromatophore. So this is the plant pigment which is covalently attached to the protein part of the phytochrome. So this way you will find that phytochrome is a conjugated protein, or it is a complex protein having protein plus phytopigment, that is chromatophore. So this is a nature of phytochrome. Okay, so you have to remember, ये जो है इसके अंदर प्रोटीन होता है और प्रोटीन दो किस्म का है, इसलिए वो डाइमर कहते हैं उसको, और उसके साथ कोवैलेंटली अटैच्ड दिस phytopigment called bylene chromatophore. तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये phytochrome है. It is a complex biomolecule, and this phytochrome is sensitive to light wavelength. Depending upon this particular wavelength, red and far red light wavelength, it responds or it produces certain physiological actions. This is the absorption spectra of two forms of phytochrome, that is PR and PFR form. So here you can see this PR form absorb 670 nanometer, whereas PFR absorb 730 nanometer light wavelength. So this graph indicates this wavelengths and its absorption by the phytochrome. So here you can see the peak of this absorption can be seen here, is it? Approximately in between 600 and 700 nanometers. So here you can see this PR form, isn't it? Phytochrome red form has its peak
it is lying about 670, isn't it? 670. Similarly, this phytochrome far red peak falls here. So here you can see about 730 or 40 something. So this graph indicates that the phytochrome pigment is very much sensitive to this range of light wavelength comprising red to far red, isn't it? And this is the range 600 to 800 nanometer is the range, and to this range this phytochrome pigment respond and produces its physiological response. Okay, so this is the important thing that you have to note down here. Now you can see this phytochrome, that is PR to PFR conformational change. Since this phytochrome is light sensitive and it absorbs a specific red and far red wavelengths of the light, and this result in the conformational change or structural change in the phytochrome. So here you can see that this is phytochrome pigment and this is the protein part. It is a protein dimer, isn't it? And attached to this protein dimer, this is chromophore, isn't it? This is the bilin pigment which is attached to the protein part of the phytochrome. Now here you can see this photo conversion of phytochrome chromophore. So here you can see this light is hitting to this molecule, and this molecule show conformational change or structural change. So here you can see this is the specific bonding, and this bonding is altered because of this red light incidence, and the conformation is altered, isn't it? Now this is the protein part that I have highlighted. So here you can see again, so this is the protein part and this is the chromophore or the plant pigment part, isn't it? So when there is a incidence of red light, this result into the structural or conformational change in the pigment. So here you can see there is alteration in the bonding and the bonds are altered. So here you can see the position, isn't it? So here you can see the position. So here it's NH and this position of the NH is altered. So here you can see NH and its position is altered here. The position of oxygen, you can see the position of oxygen now. So in this way you can see here, this is the cis isomer of phytochrome and this is a trans isomer of phytochrome. So when this phytochrome pigment absorbs far red light, it shows trans isomer. When it absorbs red light, it shows cis isomer of the phytochrome. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फाइटोक्रोम पिगमेंट के ऊपर रेड लाइट और फार रेड लाइट का किस प्रकार से परिणाम होता है. तो इस प्रकार से उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके भीतर एक किस्म का बदलाव आ जाता है. बिकॉज ऑफ दिस
रेडिएशन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। एंड दिस कन्फॉर्मेशनल चेंज, isn't it, is brought about by light। तो इस प्रकार से ये फाइटोक्रोम के अंदर एक अल्टरेशन होता है जिसे हम फोटो कन्वर्शन बोलते हैं। फाइटोक्रोम इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो ये कॉम्प्लेक्स है, जैसा मैंने बताया कि ये इसका प्रोटीन पार्ट है ये, और इसका एक पिगमेंट पार्ट है ये। सो देयरफॉर दिस फाइटोक्रोम इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इट हैज़ प्रोटीन पार्ट प्लस प्लांट पिगमेंट कॉल्ड बिलिन क्रोमोफोर। तो इस प्रकार से ये एक कॉम्प्लेक्स किस्म का बायोमॉलिक्यूल है जो लाइट को सेंसिटिव है। Phytochrome red absorb maximum at 670 nanometer and phytochrome far red form absorb at 730 nanometer. This brings about conformational change, that is a structural change in the structure of biochemical structure of phytochrome. तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो लाइट वेवलेंथ होता है वो किस प्रकार से ये बायोमॉलिक्यूल के अंदर अल्टरेशन लाता है, चेंज लाता है। एंड दिस चेंज अल्टीमेटली triggers or produces physiological actions, isn't it? This ultimately ensues in triggering of some genes. तो genes भी एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पर, and this activation of genes ultimately leads to physiological expression, isn't it? तो यहाँ पर मैंने बताया है कि ये जो जीन्स एक्टिवेट होते हैं ड्यू टू दिस कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द फाइटोक्रोम, certain genes are activated. So here I have shown the genes for fluorescein hormones are activated. तो मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि जब ये फाइटोक्रोम के अंदर ऐसा कन्फॉर्मेशनल बदल हो जाता है, कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाता है, there are certain genes and these genes are activated, and further these genes produces this hormone called fluorescein, and this fluorescein leads to flowering. तो इस तरह से हम देखते हैं कि फाइटोक्रोम के अंदर जिस प्रकार से ये स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएंगे, कुछ जीन एक्टिवेट हो जाएंगे और कुछ जीन एक्टिवेट होने के बाद सर्टन फिजियोलॉजिकल एक्शंस सच एज फ्लावर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हाइपोथेटिकल एंजाइम फ्लोरिजिन। ओके, तो इस प्रकार से ये फाइटोक्रोम अपनी एक्शन बताता है, एंड इट रिमेन्स pendulating between these two forms, isn't it, alternately, phytochrome red and phytochrome far red. Now let us see the various functions effected by phytochrome under the influence of red and far red light wavelengths. तो क्या क्या फंक्शंस ये कैरी आउट कर सकता है? तो बहुत सारे फंक्शंस है, ऐसा नहीं है कि ओनली फ्लावरिंग ही होता है, बिकॉज फाइटोक्रोम इज मल्टीटास्किंग बायोमॉलिक्यूल एंड इट हैज़ डिफरेंट फंक्शंस इन प्लांट. So for example, seed germination, isn't it? So phytochrome influence seed germination. It also influence photomorphogenesis. ये भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है. Photomorphogenesis means all the light dependent development in the plant, especially under the influence of red, far red and blue light wavelength. तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या होता है? फोटोमॉर्फोजेनेसिस यानी कि लाइट के माध्यम से प्लांट के डेवलपमेंट में जो भी डेवलपमेंट होते हैं प्लांट के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, एंड दीज प्रोसेसेस एंड फिनोमिनॉन आर टर्म्ड एज फोटोमॉर्फोजेनेसिस.
isn't it? And this is related to phytochrome. On the contrary, there is another terminology called scotomorphogenesis, and this deals with, or it is related to, the processes affected by darkness or night, isn't it? नाइट और अंधेरे से रिलेटेड जो भी प्लांट के डेवलपमेंट है उसे कहते हैं स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। जिस प्रकार से लाइट से रिलेटेड जो भी प्लांट के डेवलपमेंट है उसे कहते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस, उसी प्रकार से स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है डार्कनेस से रिलेटेड प्लांट के डेवलपमेंट या बदल, isn't it? So all these are related to फाइटोक्रोम। तो ये दोनों का भी संबंध फाइटोक्रोम से है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस एंड स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। बोथ थिंग्स आर रिलेटेड टू फाइटोक्रोम। देन स्टेम इलॉन्गेशन इज आल्सो इफेक्टेड बाय फाइटोक्रोम। ये भी होता है इसका फंक्शन। इंटरनोड होते हैं, वो भी इलॉन्गेशन के लिए फाइटोक्रोम रिस्पॉन्सिबल है। देन सेल डिफरेंशिएशन की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है, that is also related to phytochrome. Then leaf expansion and leaf movements, isn't it? अगर लीफ के मूवमेंट देखे जाए तो एग्जांपल हम दे सकते हैं टच मी नॉट प्लांट, isn't it? Mimosa pudica. So these leaf expansions and leaf movements are also related to phytochrome. फ्लावरिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम फोटोपीरियोडिज्म में देखते हैं, and this flowering process is also under the control of phytochrome. PR form synthesize phytochrome protein. तो ये भी है, फाइटोक्रोम में जो प्रोटीन होता है वो खुद का प्रोटीन भी PR फॉर्म से रिलेटेड है, इसीलिए वो भी फाइटोक्रोम के अंदर जो प्रोटीन है उसका सिंथेसिस के लिए भी फाइटोक्रोम खुद रिस्पॉन्सिबल है। Then ratio of phytochrome red and phytochrome far red cause physiological response in plants. So this is also important aspect in plant physiology, especially the ratio of phytochrome red and phytochrome far red. A special ratio cause a particular physiological action in different plant species. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज फाइटोक्रोम रेड इज हाइपो एक्टिव वेयर एज फाइटोक्रोम फार रेड इज हाइपर एक्टिव। तो दोनों का भी परिणाम होते रहता है प्लांट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर इसकी विशेषता ये है कि फाइटोक्रोम रेड जो होता है, ये फाइटोक्रोम रेड हाइपो एक्टिव है, ये कम एक्टिव है फाइटोक्रोम रेड, वेयर एज फाइटोक्रोम फार रेड इज हाइपर एक्टिव। लेकिन ये दोनों का भी एक विशिष्ट क्वांटिटी के अंदर बनना ज़रूरी है। इनका जो रेशो है, ये दोनों का रेशो, isn't it? फाइटोक्रोम आर दैट इज रेड PR और फाइटोक्रोम फार रेड, ये दोनों का एक स्पेसिफिक रेशो जब बनता है तो उसका एक इफेक्ट प्लांट के फिजियोलॉजी पे होता है। So this is also important aspect in plant physiology. It operates circadian rhythms in plant. Circadian rhythms होते हैं प्लांट के, जिसे हम biological clock कहते हैं, and this circadian rhythms are also under the influence of phytochrome. And circadian rhythm means the daylight period and night darkness periods. ये दोनों का मिल करके बनता है बायोलॉजिकल क्लॉक। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ डे एंड नाइट, डे लाइट एंड नाइट डार्कनेस। सो लाइट एंड डार्कनेस प्लेज वाइटल रोल एंड टुगेदर इट कॉन्स्टिट्यूट circadian रिदम इन द प्लांट। और ये रिदम से ही फाइटोक्रोम का संबंध है, isn't it? Because phytochrome is sensitive to day and night light wavelengths,
isn't it? So therefore ये सर्काडियन जो साइकिल होता है डे नाइट का, उससे फाइटोक्रोम का बहुत करीबी संबंध होता है. तो इन दिस मैनर यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस. इससे भी ज़्यादा बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन आई हैव कोटेड सम examples for your consideration, isn't it? So here again this is the pictorial representation of different functions of the phytochrome. So here you can see the most of the biomolecule, that is phytochrome, is located in leaves. वैसे तो प्लांट के हर हिस्से में फाइटोक्रोम पाया जाता है, लेकिन स्पेशली इट इज मोर इन leaves. Now here you can see this under the influence of solar radiation, isn't it? A red light. So when red light strike, isn't it? So this PR, phytochrome red, is converted into phytochrome far red. Similarly, under the influence of far red light wavelength, it is ranging between 700 to 750 nanometer. This PFR again is converted into PR form. Okay. The ratio of these two, PR to PFR ratio, leads to some response. तो ये responses अलग अलग हैं. जैसे मैंने बताया आपको कि Phytochrome influences seed germination, de-etiolation. तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. अगर जर्मिनेशन के बाद जो सीडलिंग इमर्ज होता है, उसको सही किस्म का लाइट अगर मिलता नहीं है तो उसका इटियोलेशन हो जाता है, isn't it? And the seedling become pale, isn't it? There will be no formation of chloroplast. Then inhibition of stem and petiole elongation, isn't it? तो स्टेम और पिटियोल का इलांगेशन ये भी फाइटोक्रोम के ही कंट्रोल में होता है. क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, isn't it? Chlorophyll biosynthesis, these are also important physiological reactions that are under the control of phytochrome, isn't it? So it is related to photomorphogenesis, isn't it? Biosynthesis of chlorophyll pigment is influenced by red and far red light, and a specific ratio of PR to PFR is needed for the biosynthesis of chlorophyll pigments. Similarly, leaf expansion, isn't it? जब शुरू में पत्ते आते हैं तो वो थोड़े से नाजुक होते हैं और कर्ली होते हैं, थोड़ा सा रोल्ड होते हैं, तो उसका एक्सपांशन होना भी ज़रूरी होता है in order to receive a proper sunlight for photosynthesis and photomorphogenesis. For that reason, leaves should be expanded with its growth, and this is also carried out under the influence of phytochrome. Branching is also very important thing, canopy formation, and this branching and canopy formation is also controlled by phytochrome. Flowering, as we know, photoperiodism, flowering is also under the influence of phytochrome. Senescence and death, isn't it? ये भी जो प्रक्रिया होती है senescence की, सेल डेथ, तो वो भी ग्रेजुअली होना चाहिए और उसके लिए फाइटोक्रोम काम करता है. सो इन दिस वे यू कैन सी मल्टीपल फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय फाइटोक्रोम. तो इतने सारे फंक्शंस फाइटोक्रोम करता है. उसमें से फ्लावरिंग, जैसे मैंने बताया कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. फोटोपीरियोडिज्म में हमने ये बात पढ़ी है, isn't it? PR to PFR conversion होते रहता है, isn't it? PR is converted into PFR and PFR is converted into PR.
So they are interconvertible under the influence of red and far red wavelength. And ultimately, a specific ratio is established. Certain genes are activated, and this hypothetical hormone fluorescein is produced in these leaves, and from these leaves this fluorescein is conducted through phloem sieve tubes to the location called floral primordia. When it reach here at the floral primordia, here you will find that flower formation occurs. तो फ्लोरल प्रिमॉर्डिया तक ये फ्लोरिजिन जाना चाहिए, isn't it? उसका इफेक्ट यहीं दिखेगा फ्लोरल प्रिमॉर्डिया में, isn't it? Because this plant has its specific location where the flower is formed. So only at this location flower is formed. In some cases axillary flowering is also reported depending upon the plant species. अगर यहाँ पर फ्लोरल प्रिमॉर्डिया होता है तो यहाँ फ्लावर तैयार होगा. अगर फ्लोरल प्रिमॉर्डिया यहाँ पर है इस जगह पर तो यहाँ पर ही फ्लावर बनेगा, लेकिन वो डेजिग्नेटेड जो सेल्स है वहाँ तक ये फ्लोरिजिन जाना चाहिए, isn't it? The cells that are destined to develop flowers are located in this location. Therefore, the effect of fluorescein is seen here only, not anywhere. कहीं भी नहीं होगा उसका. तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि फ्लोरल प्रिमॉर्डिया जहाँ पर है वहीं पर उसका फ्लोरिजिन का इफेक्ट दिखाई देगा. So therefore, PR to PFR ratio is established during photoperiodism in leaf. तो photoperiodism के दौरान यही होता है, isn't it? During the specific cycles of day and night, PR to PFR ratio is established. Specific genes are triggered, isn't it? As and when there is a specific ratio of PR to PFR, certain genes are activated when this specific ratio is achieved, isn't it? जब ये specific ratio इनका बनेगा वो प्लांट के स्पेसीज के लिए, तब उसके अंदर स्पेसिफिक जीन एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर फ्लोरिजिन बनेगा, isn't it? Hypothetical hormone fluorescein is synthesized in leaf. Fluorescein is transported to floral primordia through phloem sieve tubes. जैसे मैंने बताया कि ये यहाँ पर ये फ्लोरिजिन बनता है और ये sieve ट्यूब्स के माध्यम से यहाँ तक जाता है फ्लोरल प्रिमॉर्डिया तक और यहाँ पे फ्लावर सेटिंग हो जाता है. फ्लावर इनिशिएशन बिगिंस एट दिस स्पॉट. तो इस प्रकार से फ्लावरिंग के लिए भी फाइटोक्रोम काम करता है. सो फाइटोक्रोम PR and PFR इफेक्ट ऑन शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट. तो शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट के ऊपर PR यानी कि फाइटोक्रोम रेड एंड PFR यानी कि फाइटोक्रोम फार रेड का इफेक्ट किस प्रकार से होता है, isn't it? अब ये इनका क्रिटिकल फोटो पीरियड का ये लाइन है SDP और LDP के लिए, ये उसका क्रिटिकल फोटो पीरियड का ये लाइन है. So here you can see these dark periods are interrupted by this red and far red irradiations. Okay. Now here you can see this phytochrome red shows inhibitory effect on flowering in SDP. अभी यहाँ पर ये शॉर्ट डे प्लांट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये रेड लाइट से इंटरप्ट किया गया तो यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होता है. सो हियर दिस इज एन एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव्स दैट when this dark period is interrupted by red light wavelength, this short day plant will not flower. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेड लाइट से अगर इसको इंटरप्ट किया जाए, इसका नाइट ड्यूरेशन,
तो इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि रेड और फार रेड किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करता है। नाउ हियर यू कैन सी अनदर this thing. Phytochrome far red show reversible effect on flowering. अभी यहाँ पर हमने देखा कि this dark period is interpreted by red light wavelength, there is no flowering, but immediately this red wavelength of light is followed by far red light wavelength. So here you can see this flowering. So this flowering ensues here, isn't it? When this red radiation is followed by a far red radiation in short day plant, it will flower. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेड और फार रेड इफेक्ट करता है. फार रेड वेवलेंथ एंस्यू इन फ्लावरिंग. तो यहाँ पर और हम देखते हैं कि आगे और फिर क्या किया गया. यू कैन सी दिस फार रेड irradiation is followed by again red radiation. This is red. तो क्या हो गया यहाँ पर फार रेड फिर रेड, नो फ्लावरिंग, isn't it? ये यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं हुआ उसका, isn't it? यहाँ पर फिर इंटरप्शन. अभी ये एलडीपी के संदर्भ में हम देखेंगे. एलडीपी के संदर्भ में क्या होता है, ये यहाँ पर जो है एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट जो है, तो इसके ऊपर इसका क्या परिणाम होता है यहाँ पर देखते हैं हम. अभी ये रेड लाइट से इसको इंटरप्ट किया गया तो ये यहाँ पर आप देखते हैं कि फ्लावरिंग हो गया लॉन्ग डे प्लांट में. सो हियर फ्लावरिंग इज ऑब्जर्व्ड. नाइट इंटरप्शन बाय Phytochrome red shows, मीन्स रेड इरेडिएशन देने के बाद क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये फ्लावरिंग दिखाई दिया है लॉन्ग डे प्लांट में. उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या किया गया, फाइटोक्रोम रेड, तो रेड लाइट जो है उसके बाद फार रेड दिया गया. रेड तो यहाँ पर ये फार रेड देने के बाद यहाँ पर देखते हैं हम कि लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होता नहीं है. सिमिलरली यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रेड दिया फार रेड के बाद, तो इधर फ्लावरिंग हो गया. तो इस प्रकार से यहाँ पर रेड फार रेड हम देखते गए, तो ये फार रेड देने के बाद इधर फ्लावरिंग है, इधर नहीं है. तो इन दिस वे यू विल फाइंड दैट red and far red light wavelengths show their effect differently in short day plant as well as in long day plant. तो यहाँ पर ये मैंने लिखा है कि red light wavelength ensues in flowering. तो यहाँ पर ये लॉन्ग डे एलडीपी में रेड लाइट जो है उसकी वजह से फ्लावरिंग हुई है, और फार रेड से लाइट यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होती है लॉन्ग डे प्लांट में. सो इन दिस वे यू विल फाइंड दैट हाउ दिस पीआर एंड पीएफआर अफेक्ट टू शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग. अगेन अनदर थिंग इज हियर, phytochrome PR to PFR ratio and stem elongation. So here you can see stem elongation के ऊपर इसका क्या परिणाम हो रहा है. PR to PFR ratio is established during photoperiodism in leaf. High PR to far red ratio, isn't it? Means a red to far red ratio stunts plant and enhances leaf size. So here you can see high R to FR ratio. ये रेड और फार रेड, तो हाई रेड टू फार रेड
ये जो रेशो है इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी स्टंटेड ग्रोथ हो रही है और लीफ की जो साइज है तो बढ़ गई है। तो किस प्रकार से ये फाइटोक्रोम अपना इफेक्ट बताता है अलग अलग प्लांट स्पीसीज के ऊपर। लो PR to PFR ratio show elongated stem and reduced leaf. So here you can see when the ratio of R to FR is low, so here you can see there is elongation of stem. तो ये जो elongation हो गया and the size of the leaf is also reduced. So this is the physiological effect of phytochrome on different plants. Now another example in on germination. So here is the example of lettuce seed germination under the influence of phytochrome. So here you can see PR to PFR ratio, how this PR to PFR ratio affect to germination of lettuce seed. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इरेडिएशन शेड्यूल है और फिर यहाँ पर फाइनल इरेडिएशन कौन सा है, दैट इज द कॉलम, and here you can see percentage of seed germination. So this is the experiment. Now here you can see darkness. So darkness is a control. So finally irradiation, there is no irradiation and the percentage of seed germination is 8.5%. तो यहाँ पर कोई रेडिएशन नहीं दिया गया, seeds are just kept in darkness. So the percentage of seed germination is 8.5%. Now here red radiation is given, is it 660 nanometer wavelength. So red irradiation is the final irradiation. Now here you can see 98% seed germination occurs. So this indicates that how this red light wavelength is greatly influencing the seed germination in lettuce seed, isn't it? So एकदम आप देखोगे कि ये रेड इरेडिएशन देने के बाद 98 तक इसका जर्मिनेशन होता है. So how effective this radiation, isn't it? Now here you can see red followed by far red, isn't it? 660 nanometer plus 730 nanometer. अब ये रेड इरेडिएशन दिया, फिर फार रेड का इरेडिएशन दिया, तो ये कंबाइंड सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होगा. और यहाँ पर ये जो है तो फाइनल इरेडिएशन है फार रेड का. सो हियर यू कैन सी फार रेड इज द फाइनल irradiation. So now you can see here the seed germination is reduced greatly, 54 पे गिर गया नीचे. तो ये इंडिकेट करता है कि रेड जो है सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. और उसके बाद में फार रेड देते हैं हम और फाइनल फार रेड होता है फाइनल इरेडिएशन, तो सीड जर्मिनेशन गिर गया नीचे. So again you can see red is followed by far red and again far red is followed by red. Now this final irradiation is red, isn't it? So final irradiation red. So now here you can see 100% seed germination. So you can see there in this case how this red and far red irradiations are affecting to the seed germination of lettuce. Now again red irradiation followed by far red irradiation, again red, again far red, and final is far red. Now what will happen here? Again you can see there is a great fall in rate of seed germination. So only 43. So here in this case you will find that 100% seed germination was there, but as soon as this red is followed by far red, you will see there is a fall of percentage of seed germination. In this case again red followed by far red, followed by red, followed by far red, followed by
red, and final irradiation is red. Again you will see there is increase and enhancement in percent seed germination, isn't it? Again here you can see red followed by far red, followed by red, followed by far red, followed by red, followed by far red. Final irradiation is far red. So again there is fall in percent seed germination, and finally you can see red, far red, isn't it? So here you can see red, far red, again red, far red, red, far red, red. So here final irradiation is red, and there will be increase and enhancement in seed germination. So this particular experiment suggests that red wavelength of light is very significant. If it is followed by far red, the far red light reduces the effect of red. So therefore far red light, that is 700 to 800 nanometer retard, while red 660 nanometer promote seed germination. So this is the conclusion, and you will see this how this particular ratio. So in this case number 4, you can see here is a combination of red and far red, and there is 100% what I can say seed germination. So this is important thing. So this indicates a specific ratio is required for 100% seed germination, is it? So this is the important thing. So you have to note down here this red, far red specific ratio, and this kind of ratio is required for establishing 100% seed germination. So in this way, this indicates that the vital role played by phytochrome, red and far red forms. So you know that lettuce seed germination just we have seen under the influence of phytochrome red and far red ratio. So this is the lettuce, Leutica sativa. तो ये वो प्लांट है, इसके सीड जो है उसका जर्मिनेशन हमने देखा है. So here you can see when the seeds are given red irradiation, so here you can see there is maximum seed germination. When the seeds are exposed to far red, there is very less seed germination. So here is dark, that is control. Again here red and far red combination, again less seed germination. Again here you will find that far red is followed by red, so maximum seed germination. And this indicates that red wavelength of light is more important for lettuce seed germination, is it? Leutica sativa, it is called lettuce seed germination. Red light is more significant compared to far red light, but combination or specific ratio of red and far red cause 100% germination. So you can see combination, especially when far red light is followed by red light, right? This dose is very, very important. So high ratio of red to far red light is more beneficial. So this is the conclusion. So in this way you will find that this phytochrome plays a vital role in different plant functions. So thank you friends, hope you understood this presentation. So view this presentation repeatedly and prepare your own notes.